हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी के पेपर की और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आज हम करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये हम आज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। तो इसका आंसर है द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन in New York that takes a passenger to Galesburg, Illinois. For the protagonist Charlie, it was a medium of escape from the harsh realities, insecurities and fear of the modern world into the peaceful past of 1894. तो इसका आंसर है, और ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना, यह ध्यान रखो आप। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो इसका आंसर है द रॉयल इन्फेंट, द क्राउन प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम, ग्रेव अप टू बी ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन. He drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, and watched only English movies. Eventually, he became the Tiger King, a powerful ruler obsessed with hunting tigers. तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, और क्वेश्चन था व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, और इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। तो दोनों ही क्वेश्चन याद कर लेना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वह हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस। तो इसका आंसर हम देखेंगे, डॉक्टर सदाओ होकी वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट हु वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी टू मेक वाउंड्स entirely clean. His house was built on rocks well above a narrow beach on the Japanese coast, surrounded by pine trees. तो यह इसका आंसर है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सदाओ होकी वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट हु वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी टू मेक वाउंड्स entirely clean. His house was built on rocks well above a narrow beach on the Japanese coast surrounded by pine trees. इसके बाद क्वेश्चन जो 13 होता है आपके एग्जाम में वह है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो 75 वर्ड्स में यहाँ पर आंसर लिखना है, कोई से 2 क्वेश्चन का, और हर प्रश्न 3 नंबर का होता है और कुल 6 नंबर का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो इसका मतलब क्या है हमें बताना है। तो इसका आंसर है दिस थॉट कम्स टू फ्रांस माइंड व्हेन ही hears the pigeons cooling on the roof of the school after the order from Berlin was announced. It reflects France's innocent but powerful realization of the cruelty of linguistic chauvinism. It means that the Germans were trying to impose their language even on the natural habit of the people. France wonders if the Germans have the power to control nature and change the language of birds too. It highlights the point that a person's mother tongue is as natural to them as schooling is to a pigeon, and it is impossible to take that away by force. तो इसका आंसर है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वह है व्हाट वाज पैनकेक, व्हाई वाज इट ब्रोट इन ट्रंक लोड्स इन जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो। व्हाट वाज पैनकेक, व्हाई वाज इट ब्रोट
in truckload in Gemini Studio. तो इसका आंसर है pancake was the brand name of the makeup material. Pancake was the brand name of makeup material that Gemini Studios used in large quantities. It was a very popular brand used by famous movie stars of that era. It was brought in truckloads because Gemini Studios was one of the largest film production houses, and there was a constant need for heavy makeup for the actors. The makeup department used it to turn the actors into monsters or look presentable under the bright stage lights. The massive quantity shows the scale of work and the importance of the makeup department in those days. तो ये आंसर इसका क्वेश्चन है व्हाट वाज पेनकेक, वाई वाज इज ब्रॉट इन ट्रकलोड्स इन जेमिनी स्टूडियो. तो इसका आंसर ये आपको याद कर लेना है. इसके बाद एक और क्वेश्चन तैयार करेंगे हम इसका, और वह है हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच. हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच. तो इसका आंसर है Umberto Eco explained that he utilizes the interstices or the empty spaces in his life to write. According to him, most people have a lot of free time between different activities. For example, while waiting for someone to come up in an elevator from the first floor to the third floor, he uses those few minutes to write. Instead of wasting these small gaps, he works on his creative project. This discipline and effective time management allow him to produce a hug amount of academic and fictional work despite his busy schedule. तो यस आंसर है इसका. क्वेश्चन फिर से हम देख लेंगे. क्वेश्चन है कि हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच. तो इको को इतना लिखने के लिए इतना समय कहाँ से मिल जाता था. तो यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे बचा भी सकते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आंसर है Umberto Eco explained that he utilized the interstices or the empty spaces in his life to write. According to him, most people have a lot of free time between different activities. For example, while waiting for someone to come up in an elevator from the first floor to the third floor, he uses those few minutes to write. Instead of wasting these small gaps, he works on his creative projects. This discipline and effective time management allow him to produce a hug amount of academic and fictional work despite his busy schedule. तो इस प्रकार से हमने यह क्वेश्चन आंसर देख लिए जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है. तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.